Hello children, how are you doing? I'm sure you're revisiting all skills and topics day by day. Children, have you ever realized how privileged we are that we have all five senses given by God? The sense of sight being the most wonderful and valued sense, because then we can see everything and appreciate the beauty of nature. But there are some people in this world who are not so fortunate and have not got this blessing. But there were some people out there who thought about them. कोई तो ऐसा था जिन्होंने ऐसे लोगों के बारे में सोचा जो देख नहीं पाते हैं. So today's story is about such people. Unit 6, a flash of light. It was a cold day and Valentine walked briskly down the cobbled street. It was getting dark and he was in a neighborhood he was not very familiar with. एक आदमी था वैलेंटीन जो कि तेज तेज चल रहा था एक ऐसे नेबरहुड में, एक ऐसी जगह में जो उसके जान पहचान का नहीं था, वो उससे फेमिलियराइज्ड नहीं था. He was on his way home and was thinking about the warm room and the glowing fire that would greet him on his arrival. A carriage pulled by horses rattled past as Valentine reached the corner of the street. To avoid being trampled by the horses, he stepped back on to the pavement. जब वो इन ख्यालों में डूबा था कि वो घर में जाएगा, आराम करेगा, तभी वो पेवमेंट पे चलने लगा, यानी सड़क के किनारे जो जगह होती है जिसे फुटपाथ भी कहते हैं, वहाँ चलने लगा क्योंकि रास्ते में तेज तेज घोड़े भाग रहे थे. Before Valentine could cross the road, he heard a rustling sound behind him. He turned and saw in the shadows of a wide doorway a man standing with his hat in his hand. जैसे ही वो मुड़ा उसने देखा एक रसलिंग साउंड, खड़खड़ाती हुई एक आवाज़ जो कि एक आदमी से आ रही थी. वो खड़ा था उसके पीछे एक हैट लेके, शायद वो कुछ मांगना चाहता था. प्लीज सर, said the man, spare some money for a poor blind beggar. So children, this person was a poor blind beggar. Valentine was a kind, soft-hearted man and had thought a lot about the problems of blind people. बच्चों, वैलेंटीन बहुत ही अच्छे दिल का व्यक्ति था और वो जो ब्लाइंड पीपल थे उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी दिक्कतें, उनकी तकलीफ़ों के बारे में सोचता रहता था. He had often wondered how he could be of help to the blind. On hearing this request, he at once removed one of his gloves and putting his hand into his pocket, pulled from it a coin which he put in the blind beggar's hat. अब क्योंकि वो हमेशा से यही सोचता रहता था कि कैसे मैं इन लोगों की मदद कर सकूं, उसने तुरंत अपनी जेब में हाथ डाला और एक कॉइन निकाला उस बेगर को देने के लिए. The blind beggar mumbled his thanks and Valentine walked away. He was halfway across the road when he heard the beggar call out, "Sir, sir, please, just a moment." Valentine turned once again and returned to face the blind man. अभी वो मुड़ा ही था कि न जाने beggar ने उसे क्यों पुकारा. "Surely, sir," said the beggar, who was an honest man, "you have made a mistake. You have given me a franc instead of a sou." बेगर ने बोला, आपने मुझे एक फ्रैंक दिया है जबकि आपको मुझे सिर्फ एक सू देना था. यहाँ हम करेंसी की बात कर रहे हैं. आगे देखिए क्या होता है. Valentine was astonished. He was not surprised by the man's honesty, but by the fact that he could tell so quickly the difference between a franc and a sou. उस बेगर की ऑनेस्टी से ज़्यादा वैलेंटाइन को किसी और बात पे ही अचंभा हुआ कि कैसे एक ब्लाइंड व्यक्ति दोनों टाइप की करेंसी में अंतर बता पा रहा है, वो भी इतनी जल्दी.
How did you know that I had given you a franc? Asked Valentine. Oh, replied the beggar. It is enough for me to pass my finger over it. This was like a flash of light in Valentine's head. Here, flash of light is used as an expression for a sudden awakening or a sudden idea that comes to one's mind. Flash of light. Valentine allowed the beggar to keep the franc, although it was a great deal of money in those days. Valentine को जैसे ही आइडिया आया उसने बेगर को वो फ्रैंक रखने दिया, जबकि वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट था उन दिनों में. As he continued his walk, he thought to himself, if the blind can distinguish at the least touch a piece of money, why should they not distinguish a mark, a letter or a figure? अब वैलेंटीन ने सोचा कि जब इतने कम समय में सिर्फ छूने मात्र भर से उस बेगर ने दो चीज़ों में फ़र्क बता दिया कि ये फ्रैंक है ये कॉइन या सू, तो अगर उन्हें कोई फिगर मिले, सिंबल मिले, तो वो क्यों नहीं पहचान सकते? Children, the word here to tell the difference between two things is distinguish. When we can differentiate between two things, distinguish. In short, they should be able to distinguish any sign so long as it is raised. Because कॉइन में भी जब उस वेगर ने छुआ था तो जो सिंबल बना था कॉइन में वो थोड़ा रेज्ड था, थोड़ा उभरा हुआ था. With this idea, Valentine took home a blind boy who he found begging at a church door. The blind boy became his first pupil and learnt very quickly how to read from raised signs. So, the first pupil, the first student was a blind boy who he found begging. Pupil here means student. With the help of money donated by the public, Valentine was able to start a school for the blind. Some years later, a blind man called Louis Braille, 1809 to 1852, also a Frenchman like Valentine, perfected a system of writing, especially for the blind. This writing is called Braille. कुछ सालों बाद बिल्कुल वैलेंटीन की तरह लुई ब्रेल नामक आदमी ने, जो एक फ्रेंचमैन थे वैलेंटीन की तरह ही, जिनका जन्म हुआ था 1809 में, उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिससे जो ब्लाइंड लोग थे चीज़ों को छूकर, कुछ सिंबल्स को छूकर पढ़ सकते थे, लिख सकते थे, और इस सिस्टम को नाम दिया गया ब्रेल, उन्हीं के नाम पर. Braille is a special alphabet used by the blind. The alphabet is marked by raised dots on stiff paper, which blind persons can understand by the touch of their fingers. बच्चों, ब्रेल एक स्पेशल अल्फ़ाबेट होता है, जैसे कि हम पढ़ते हैं ABCD, ऐसे ही उनके लिए एक स्पेशल अल्फ़ाबेट होता है जो एक बहुत ही सख्त यानी कि स्टिफ पेपर पर कुछ उभरे हुए अल्फ़ाबेट्स होते हैं, और जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो उन्हें टच करके, उन्हें छू के उसका शेप पता कर लेते हैं और जान लेते हैं ये कौन सा अल्फ़ाबेट है, और उन्हें जोड़कर वो वर्ड्स पढ़ सकते हैं. Louis Braille himself was blind and worked in a blind school in Paris. The system that he developed in 1834 was not used much until about the time of Braille's death in 1852. Each letter in the Braille alphabet consists of one or more raised dots. In the diagram below, the small dots represent unraised marks, the large dots represent raised marks. जैसे कि आप देख रहे हैं, जो ये अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं, जो रेड डॉट्स हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेज्ड मार्क्स, यानी वो उभरे हुए डॉट्स हैं जिन्हें छू सकते हैं, और जो दूसरे डॉट्स हैं वो उभरे हुए नहीं हैं. तो इसी तरह इन अल्फ़ाबेट्स को छू के
वो लोग इनकी शेप पता कर सकते हैं। और हर एक अल्फ़ाबेट रिप्रेजेंट करता है इंग्लिश का अल्फ़ाबेट। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये H है, तो ये H की बनावट है ब्रेल में। ऐसे ही E, L, L और O. From the diagram above, you can see that the letter H consists of 3 raised dots and the letter L consists of 3 dots, 2. However, the dots for H are in a different pattern to those which make up the letter L. अब H और L के जो raised dots हैं उनका नंबर भी सेम है, वो एक ही लग रहे हैं, लेकिन उनका पैटर्न अलग होगा। तो हर अल्फ़ाबेट का पैटर्न अलग ही होगा। There are 6 possible positions for each dot. By placing the dots in various positions, 63 different patterns or shapes can be made. अब क्योंकि हर डॉट के प्लेसमेंट में पैटर्न भी अलग है, तो 63 different patterns और shapes बन सकते हैं. This means that there are patterns for each of the 26 letters of the alphabet. In addition to these 26 patterns, there are patterns for special words or words that are used a lot in everyday language. Some of the common words such as and, if, it, for, the and many other frequently used words have one braille symbol each. कुछ words ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं regularly, बहुत frequently. उन words के लिए एक ही symbol लिया जाता है. ये words हैं if, it, for, the, etc. For example, the word and occurs very frequently in English. To make it easier to read in Braille, it is written like this. So as you can see here, this pattern represents and not the spelling of A-N-D. Otherwise, each letter would have to be written like this. So the pattern here would have been long, hence just one pattern for the word and. Books in Braille have to be quite thick. This is because raised marks are punched. Punched out in rows across each page. अब जो ये ब्रेल की बुक्स होती हैं वो थिक होती हैं, उसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा होगी क्योंकि हर एक पेज है उसमें डॉट्स हैं, वो भी रेज्ड हैं, तो उसकी थिकनेस ज़्यादा होनी ही है। और इन किताबों में हर जगह रोज़ होती हैं. The raised marks have to be big enough to be felt by the fingertip, so the paper has to be stiff. अब क्योंकि जो पढ़ने वाला बच्चा है या कोई व्यक्ति है वो इन अल्फ़ाबेट्स को छुएगा, छू के पढ़ेगा, तो एक उसका कागज़ स्टिफ होना चाहिए, सख्त होना चाहिए, मोटा भी होगा और वो डॉट्स बड़े होने चाहिए ताकि वो अच्छे से उन्हें छू सके. Many books are written in Braille. Blind people can be taught how to read Braille, and in this way they too can read and enjoy the works of the great authors. बिल्कुल हमारी और आपकी तरह जो लोग ब्रेल की बुक्स पढ़ते हैं वो धीरे धीरे से पढ़ना सीखते हैं ताकि वो भी हमारी और आपकी तरह बहुत अच्छे अच्छे ऑथर्स की किताबें पढ़ पाएँ. There are also machines that help blind people to write in Braille. ना सिर्फ पढ़ना बट उन्हें सिखाया जाता है कैसे ब्रेल में लिखें और इसके लिए मशीन्स का यूज़ भी किया जाता है. Now you can see the Braille alphabets given here. All of them right representing each alphabet as we see in English, right from A to Z here. Children, wasn't that very, very insightful and encouraging? I'm sure you learned a lot about how we can help others who are less privileged. It was because of a wise person who made an effort to do something for such people. I'm sure you are really motivated today after reading this real story. Read the text again and enjoy it. Don't forget to attempt the book exercises.